नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट दृश पर, जहाँ हम करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, वो भी इंटरेस्टिंग तरीके। यहाँ हम हर टॉपिक्स कवर करते हैं सेक्शन वाइज और आपको मिलता है एग्जाम टिप्स एज वेल एज द हिंट फॉर द नेक्स्ट सीरीज टॉपिक। और हर टॉपिक्स जो एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली लाइक UPSC, BPSC, NET and many more, all the topics will be covered in our series and you can expect questions such as MCQs, match the following questions, all from this sections as well. तो अब पेन और नोटबुक रेडी रखिए और चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोगों का सीरीज, दैट इज हिस्ट्री सीरीज पार्ट 6, द राइज ऑफ मगधा एंड द मौर्यन एम्पायर के बारे में जानते हैं सेक्शन वाइज। तो सेक्शन 1 में जानते हैं द राइज ऑफ मगधास एंड द महाजनापदास के बारे में। इन द लास्ट सीरीज पार्ट 5 आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट द महाजनापदास, जो 6th सेंचुरी के टाइम में इवॉल्व हुए into 16 Mahajanapadas, जो एक powerful kingdoms या republics थे। You can check out our last video if you want detailed explanation regarding Mahajanapadas. But the most important kingdom among these Mahajanapadas were the Magadha. तो अब जानते हैं कि मगधा ही सबसे पावरफुल किंगडम क्यों था। मगधा में फर्टाइल लैंड था, तो it was the main epicenter for agriculture and had also the extensive use of crops as well. And है iron resources, राजपुर एंड गया में आयरन मिल्स थे, सो इट वॉज वन ऑफ द प्लस पॉइंट फॉर मगधा। थर्ड है एलिफेंट्स एक्सेस। यस, इन द वॉर टाइम्स एलिफेंट्स प्ले अ मेजर रोल, तो उधर में एलिफेंट्स का एक्सेस बहुत इजी था, तो वो उनके वॉर टाइम्स में हेल्प करता था। फोर्थ है एफिशिएंट रूलर्स, जैसे कि बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु वेर द मेन प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मगधा, और इनका एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन था एंड दिस इज द लास्ट रीजन, जिसके वजह से इनका ट्रेड और मिलिट्री में भी बहुत बूस्ट हुआ एंड इट हेल्प देम। चलिए अब जानते हैं द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ मगधा, दैट इज हरियांका डायनेस्टी, और इसके फाउंडर थे बिम्बिसारा, जिसने अग्ना को एनेक्स किया एंड दे हैव यूज्ड द डिप्लोमेसी ऑफ मैरिज इन एनेक्सिंग द प्लेस। एंड देन कम्स द अजातशत्रु हु बिकेम द किंग बाय किलिंग हिज फादर। हाँ, अजातशत्रु ने लिचाविस के अगेंस्ट भी अपना वॉर जीता एंड दे यूज्ड अ टेक्निक कॉल्ड महाशिलकंटका, जो एक वॉर इंजन का टेक्निक था। तो चलिए इस सेक्शन से जो मैं आपको एग्जाम दे सकती हूँ वो होंगे ही हु यूज्ड महाशिलकंटका इन वॉर एंड व्हेन वाज द महाजनपदास इवॉल्व्ड एंड व्हाई वाज मगधा द मोस्ट प्रोमिनेंट महाजनपदा, गिव रीजंस एज वेल एज वेयर वाज आयरन मिल्स फाउंड इन Magadha, and then you can expect questions who were the two prominent rulers of Magadha, who was the founder of the Haryanka dynasty, or which was the first dynasty in the Magadha. These are the questions that you can expect. Now in section 2, let's know about the Nanda dynasty and the entry of Chandragupta Maurya. So after the reign of Ajatashatru came the Shishunaga dynasty, and then it led to the coming of the Nanda dynasty in the Magadha region. और फिर इस नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे धनानंदा। ये रूलर एक्सट्रीमली रिच थे बट ही वॉज अनपॉपुलर, क्योंकि उसका जो ऑप्रेसिव टैक्सेशन का पॉलिसी था इट वॉज नॉट सीन एज अ गुड नोटिस। एंड उसके टाइम में Alexander had already reached India but not close enough to Magadha, but Alexander's invasion has already started. So there was a sort of political instability going on within the dynasty, और तभी एंट्री होता है चंद्रगुप्ता मौर्य का, जो अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य रेन करने आते हैं। वी ऑल नो चाणक्य एंड हिज अंडर द नेम दैट इज कौटिल्य, एंड he was known for his greatest works like Arthashastra. He was also the written poet and he also was the advisor to the Chandragupta Maurya. तो इस सेक्शन से जो आप एग्जाम टिप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे ही आफ्टर द Ajatashatru's dynasty, that is the Haryanka dynasty, which dynasty came into power, then you have to name along with the sequence, and who was the last ruler of the Nanda dynasty, you have to mention that as well, and why was he unpopular, for what action of his made him unpopular. You can expect such questions. And at whose reign was the entry of the Alexander as well as the entry of the Chandragupta Maurya took place. You have to mention that. And what is the other name of Chanakya, or what is the other name of Kautilya? Who wrote Arthashastra? These are sort of questions that you can expect from this section. Now in section 3, let's know about the Mauryan Empire,
जो थे 321 BCE से 185 BCE तक। मौर्यन एम्पायर इंडिया का सबसे पहला सेंट्रलाइज्ड एक एम्पायर था जिसका फाउंडर था चंद्रगुप्त मौर्य एंड ही वाज द वन हु डिफीटेड धनानंदा जो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलेकस जो एक ग्रीक जनरल थे उनसे भी वॉर में जीत गए थे एंड इन रिटर्न देयर वाज अ ट्रीटी साइन अमॉन्ग देमसेल्व्स जिसके बदले में जनरल ग्रीक जो थे उनको अपनी डॉटर के साथ 500 एलिफेंट्स देना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसी रेन में मेगास्थनीस को भेजा गया था सेलेक्यूस के अपने ग्रीक जनरल कोर्ट से इंडियन चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एंड इधर से जो अपनी अकाउंट लिखे थे मेगास्थनीस ने वो था बुक इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया बिंदुसारा हु वाज सन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसारा was given a title, वो था अमित ग्रह था, that is the destroyer of enemies। इन्होंने अपना जो annexation process था वो डेक्कन तक ही लिमिटेड था but it was not till far south। बिंदुसारा के बाद आया अशोका the Great, was one of the most famous Mauryan ruler and he was the one who fought the Kalinga War जो था 261 BCE में। The Ashoka won the Kalinga War, but after seeing the dead bodies of the people over 1 lakh, which included children and women as well, he was deeply moved by that and he had renounced the war affairs and converted himself to Buddhism। Buddhism में convert होने के बाद उन्होंने धम्मा spread करने का सोचा जिसका मतलब है ethical governance। अशोका के इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट्स के बारे में जानते हैं, दैट इज द कलिंगा एडिक्ट्स which means the regret for war and there are some major rock edicts जिसके 14 टोटल मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले गए हैं। कुछ पिलर एडिक्ट्स भी है जहाँ पे धम्मा का मेंशन भी है and among the rock edicts the 30th rock edict mentions the Kalinga War। Maski inscription we get the name of the Ashoka scripts as well। फिर बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के बाद अशोका ने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया वर्ल्ड वाइड, जैसे अपने सन एंड डॉटर को, जैसे सन का नाम था धर्मेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, एज वेल एज सेंट मिशनरीज टू सीरिया, इजिप्ट, ईस्ट एशिया एंड मेनी मोर। तो इस सेक्शन से जो आप एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे कुछ क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट वाज द रेन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, whom did Maurya the Chandragupta Maurya defeat, who was the founder of the Mauryan dynasty and in whose reign did Megasthenes come, and more questions, whom did he defeat Chandragupta Maurya in his war, in exchange of which he got 500 elephants and his daughter, and you can also expect questions that who succeeded Chandragupta Maurya, what was the name of his title and what was its meaning. Then the main questions will come from the Ashoka's reign as well. In which year did he fight the Kalinga War against whom, who won, and what did it impacted in his life, and what are the name of his son and daughter whom he sent to Sri Lanka to spread Buddhism, and what are the other places where he sent, and in which edicts did we find the Ashoka's name, and name all of meanings of all the edicts or the inscriptions found in according to his reign. These are the questions you can expect. There's a whole lot of questions, more than any other sections. So अब section 4 में जानते हैं the decline of the Mauryan Empire. After the death of Ashoka, the greatest empire of the Mauryan reign, Mauryan Empire का decline start होने लगा and it led to its downfall। अब जानते हैं कुछ reasons for the decline or the downfall, जैसे कि weak succession, weak rulers who couldn't have the capacity to rule, फिर था over centralization, जैसे कि पूरे इंडिया में the so called region उन लोगों का जो centralization था वो ठीक से manage नहीं हुआ, there was management policies lacking, as it was a huge empire it was difficult to control for them। और जो economic burden था धम्मा campaigns and welfare schemes का, उससे उन लोगों का बहुत ही financial downfall भी होगा। जैसे कि लास्ट रूलर थे मौर्यन एम्पायर के बृहद्रथ जिसको पुष्यमित्र शुंगा ने हटा दिया था and then he annexed the place, and this Pushpamitra Shunga was the one who was the founder of the Shunga dynasty। तो इस सेक्शन से जो आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे what led to the decline of the Mauryan Empire, name some, and they can give this in multiple choice questions and you have to understand on the basis
of the study of this place, which I've already given the reasons. And then who was the last ruler of the Mauryan Empire, even that, and in which year, who defeated the last ruler of the Mauryan Empire, and which dynasty was formed just after the Mauryan Empire. You have to mention that as well. And who founded the new dynasty, under whose leadership, or in which reign, in which year. These are the questions that you can expect. चलिए अब करते हैं क्विक रिवीजन और एग्जाम फोकस्ड क्वेश्चंस और फैक्ट्स में. द फर्स्ट कम्स द बिम्बिसारा, जो अपने मैरिज डिप्लोमेसी के थ्रू अंगा एनेक्स्ड किया था. देन कम्स द अजातशत्रु, who used a war tactics at his Mahajanapadas, and he also fought against the Lichavis. Then Dhanananda, he was the last Nanda, and he was defeated by Chandragupta Maurya. And then Chandragupta Maurya was the first Mauryan Empire ruler, and he defeated Seleucus. Ashoka will be known for Kalinga War and his method of spreading Buddhism over India and also over world. जो most asked MCQs होंगे वो होंगे edicts of Ashoka, and then the foreign ambassadors in their court, which will include Megasthenes. As dynasty sequence, they can tell you to place them in a chronological order, and this can come in MCQs as well as match the following also. Questions regarding Kautilya and Chanakya will also come under whose reign, and you have to know his works as well, his administration policies and everything. तो दोस्तों ये था हमारा हिस्ट्री सीरीज का पार्ट 6, जहाँ हमने कवर किया द मौर्यन एम्पायर के बारे में, द राइज ऑफ मगधा एंड द महाजनापदास के बारे में. तो इस सेक्शन में सारे जो सेक्शंस है वहाँ पे आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में सब डिटेल्स में पता चलेगा, इवन द सीक्वेंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ऑल द डिटेल्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस वीडियो. आई होप आई कुड ब्रिंग आउट द एवरी एसेंस ऑफ दिस टॉपिक. Just go check it out and make notes out of it, and also go through the detailed MCQs that I have mentioned in the end of the video, as well as after the end of each sections I have given the exam tips, which is very important for you to know and to note down. तो next video में हम जानेंगे, that is part series 7, हम जानेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में, his rulers, their reigns and what impact did it have on the whole history. तो तब तक हमें लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड शेयर आवर वीडियोस विद आवर फ्रेंड्स व्हाइल इन द वर्ज ऑफ गिविंग सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज UPSC, BPSC और NET.